मैं अकेली थी घर में, तो वो आया और गन पॉइंट पे मेरे साथ उसने रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मैं बहुत चिल्लाई, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, उसने मेरे बालों से खींचा, मुझे ज़मीन पे मैं बहुत ही ज़्यादा हरासा और ऐसे भाग गया। एफआईआर जो कटवा दी गई। Malam itu, ia tak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Malam itu, ia tak pernah menduga bahwa kejahatan akan datang mengetuk di tengah keheningan. Hidupnya berubah, kehormatannya direnggut, tubuhnya terluka, jiwanya hancur. Malam itu menjadi awal dari sebuah tragedi yang mengguncang hati, yang menguji iman, dan yang menunjukkan betapa kejamnya dunia ini. Ini bukan sekadar kisah, ini adalah kenyataan. Kenyataan yang harus kita dengar, kenyataan yang harus kita suarakan. Karena di luar sana, ada banyak jiwa yang menunggu keadilan. Karena di luar sana, saudari-saudari kita seiman, terus berjuang, terus bertahan, meski dunia seakan menutup mata. Namun, ia tidak sendiri, karena ada satu nama yang selalu menjadi kekuatannya, Yesus Kristus. Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Hari ini, sebuah kisah tragis harus kita dengarkan. Sebuah kisah yang tak seharusnya terjadi, tetapi nyatanya menjadi kenyataan. Ini adalah kisah seorang wanita Kristen di Pakistan. Seorang wanita yang mengalami ketidakadilan yang begitu besar. Dan kini, ia berani berbicara. Namanya Asia Bibi. Seorang wanita Kristen dari distrik Sargodha, Pakistan. Hidup sebagai minoritas. Selalu dalam bayang-bayang ketakutan. Tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa malam itu menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Asia Bibi sendirian di rumah. Malam itu sunyi, seolah semesta pun tak ingin bersuara. Namun, dalam keheningan itu, ada yang mengintai, ada yang menunggu, ada yang siap menerkam. Seseorang masuk dari jendela belakang. Bukan tamu, bukan teman, tetapi seorang pria tak dikenal yang datang membawa kegelapan. Ia datang bukan untuk berbicara, bukan untuk meminta pertolongan, tetapi untuk menghancurkan. Sebuah pistol ditodongkan ke arahnya. Nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Ia mencoba melawan, berjuang dengan segenap tenaga. Tetapi bagaimana mungkin seorang wanita tak bersenjata bisa menang melawan kebiadaban? Detik itu, hidup Asia Bibi berubah. Kehormatannya direnggut, tubuhnya terluka, jiwanya hancur. Namun di tengah penderitaan itu, ia berpegang teguh pada iman. Karena ia tahu, Yesus tidak pernah meninggalkannya. Asia Bibi mencari keadilan. Tetapi keadilan tak semudah itu didapatkan. Di Pakistan, menjadi seorang Kristen bukan hanya berarti menjadi minoritas, tetapi juga berarti hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan perlakuan tidak adil. Ketakutan akan ancaman yang selalu mengintai. Saat ia meminta pertolongan, bukan perlindungan yang ia dapatkan, tetapi tekanan untuk diam. Mereka datang kepadanya, bukan untuk menolong, tetapi untuk membungkamnya. Suara laki-laki kasar, dengan nada mengancam. Lupakan kasus ini. Jangan mencari masalah. Tapi bagaimana mungkin Asia Bibi melupakan? Bagaimana mungkin ia menerima ketidakadilan ini begitu saja? Bagaimana mungkin dunia ini membiarkan kejahatan terus berulang, tanpa ada konsekuensi? Asia Bibi bukan satu-satunya. Berapa banyak wanita Kristen di Pakistan yang telah menjadi korban seperti dirinya? Berapa banyak yang dipaksa menikah dengan penculik mereka? Berapa banyak yang dipaksa berpindah agama dengan ancaman dan kekerasan? Namun dalam hati Asia Bibi, ada cahaya kecil yang terus menyala. Karena ia percaya bahwa Yesus bersamanya. Ia percaya bahwa Yesus tidak akan membiarkannya berjuang sendirian. Dengan suara bergetar, "Saya tidak pernah membayangkan ini bisa terjadi pada saya. Saya berjuang, saya berusaha. Tetapi saya hanya seorang wanita. Saya hanya ingin keadilan. Jika saya diam, berapa banyak lagi yang akan menjadi korban setelah saya?"
Tetapi saya percaya, saya yakin bahwa Yesus tidak akan meninggalkan saya. Ia melihat air mata saya, dan Ia akan mengulurkan tangannya melalui mereka yang peduli, melalui mereka yang berani menyuarakan kasih. Hari ini, sebuah kisah nyata akan terdengar. Sebuah kisah yang tak seharusnya terjadi. Sebuah tragedi yang mengguncang hati. Sebuah bukti bahwa ketidakadilan masih berkuasa di dunia ini. Ini bukan hanya sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang harus didengar. Dan inilah kesaksian dari Asia Bibi. Neelam, I'm from Daska, Sialkot. Today I have been attacked. I was alone at home. A person came from back wall of my home and he tried to rape me on gunpoint. Then I struggled and I was able to secure myself. I shouted and the person next to my home came and he tried to save me. Then the person ran away. मैं अकेली थी घर में, तो वो आया और गन पॉइंट पे मेरे साथ उसने रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मैं बहुत चिल्लाई, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। उसने मेरे बालों से खींचा, मुझे ज़मीन पे फेंका। मुझे जो है वो मुझे बहुत सारी चोटें भी आई हैं। इसी लिहाज से मैं बहुत ही ज़्यादा हरासा हुई और उसने ये मेरी आँख के ऊपर भी उसने जो है वो मुझे गन पॉइंट बुलेट मारा उसने, और जो है वो मुझे बहुत सारा जो है वो टॉर्चर किया और ऐसे भाग गया। FIR जो कटवा दी गई और FIR की जो अटैच्ड कॉपी है वो भी हमारे पास है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मुझे बचाया जाए। मैं यहाँ अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती। Hi, this is Hani Manzoor and this is Neelam. As we both have already shared the barbaric incident that took place 2 days ago, and we are feeling very unsafe here. The people are approaching here. They are trying to influence the case and they are demanding us to quit the case. Neelam is really disturbed, and as minority, as living in Pakistan, we are in minority and we are in fear. We need your support. We want you to please be stand with us, be united with us. मैं बता नहीं सकता कि हाउ वी आर फीलिंग। मैं आप अपने बहन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ आप हमारे साथ खड़े हों। और चूंकि आज मिनॉरिटी होते हुए पाकिस्तान में हमें बहुत से ऐसे केसेस का सामना करना पड़ता है जहां पे जेन्युइनली लोगों पर उनको केसेस से हटाने के लिए उन पे तेज़ाब फेंका जाता है, उनको गोलियों से मारा जाता है, उनको पैसे दे के इन्फ्लुएंस किया जाता है और बहुत से और दूसरे तरीक़ों से। तो मैं और यहाँ पे नीलम जो है जिस तरह से वो आया और जिस तरह से उसने इन्फ्लुएंस किया, और उसके बाद जो लोग जिस तरह से लोग मिनॉरिटी के मेंबर को और नीलम को दोष दे रहे हैं, तो वी आर रियली डिप्रेस्ड और वी रियली नीड योर सपोर्ट। तो नीलम अब आप बताएं कि आप कैसा भी फील कर रही हैं और आप क्या डिमांड कर रही हैं? मैं बिल्कुल अनसेफ फील कर रही हूँ बिकॉज इट हैपन टू मी एंड बीइंग क्रिश्चियन and being an educated girl, it was very shocking thing, and even it is unbelievable thing for me that it happened to me. So I feel that this environment is not safer for us, because if a girl who is educated is not safer, how it will be possible that a girl who is uneducated बिल्कुल। और अब देखिए, आप यहाँ पे मूव करते हुए शी इज़ अनएबल टू गो टू यूनिवर्सिटी, शी इज़ अनएबल टू गो टू कॉलेज, टू हर जॉब। और मैं आप लोगों से सिर्फ यहाँ पे यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हों। हमें पता चलना चाहिए जो वादे, जो हुक्मरान, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो वादे करते हैं कि जी हम मिनॉरिटीज़ के साथ हैं और हम आप लोगों के साथ हैं, वी वांट कि आप लोग खड़े हों। क्या जब हम मर जाएंगे हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हमारे ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाएगा, तो तब आप लोग आएंगे? अभी हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, तो प्लीज़ हमारे साथ खड़े हों। हमें इस चीज़ का सबूत दें कि वाकई आप हमारी कदर करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं और आप हमारे हुक्मरान हैं। हम दोनों मिलकर इस पैगाम को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्लीज़ हमारी मदद के लिए आएँ और हमारी मदद करें। खुदावंद आप सभी के साथ हो। Hari ini, Asia Bibi menyerukan kepada kita semua.
Saudara-saudaranya seiman, mereka yang percaya pada kebenaran, mereka yang percaya bahwa keadilan harus ditegakkan. Korban dengan suara penuh harap. Inilah saatnya kita bersatu. Jangan biarkan ketidakadilan terus terjadi hanya karena kita takut. Jangan biarkan kejahatan menang karena kita diam. Yesus memanggil kita untuk menjadi terang di dalam kegelapan, untuk membawa damai di tengah ketidakadilan, untuk menjadi tangan dan kakinya di dunia ini. Kita bisa membantu dengan menyebarkan kisah ini, dengan memastikan dunia tahu bahwa minoritas Kristen di Pakistan membutuhkan perlindungan, karena mereka tidak sendiri, karena kita saudara seiman, dan karena kita tidak akan membiarkan mereka berjuang sendirian. Kini, Asia Bibi hanya bisa berharap bahwa Tuhan melihat, berharap bahwa keadilan akan ditegakkan. Asia Bibi berbisik dalam doa. Ya Tuhan, lihatlah penderitaan kami. Lihatlah ketidakadilan yang terjadi pada anak-anak-Mu. Berikanlah kekuatan bagi mereka yang tertindas, keadilan bagi mereka yang dianiaya, dan bukalah hati mereka yang berkuasa agar mereka bertindak dengan benar. Asia Bibi tidak tahu apakah suaranya akan didengar. Ia tidak tahu apakah keadilan akan datang. Tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan berhenti berjuang. Dan Asia Bibi berharap, kita juga tidak akan tinggal diam, karena Yesus tidak pernah tinggal diam. Dan melalui kita, kasih-Nya akan mengalir. Dan keadilan akan ditegakkan. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Matius bab 5 ayat 10. Jangan biarkan suara ini hilang. Jangan biarkan ketidakadilan menang hanya karena kita diam. Terima kasih telah menonton video ini. Doa adalah senjata yang kuat, tetapi tindakan nyata juga dibutuhkan. Kita harus berdoa bagi mereka yang tertindas, tetapi juga menyebarkan kisah mereka, mendukung mereka, dan memastikan bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Kisah ini bukan sekadar cerita, ini adalah kenyataan yang masih terjadi. Bagaimana tanggapanmu? Apa yang bisa kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Yesus? Silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menyebarkan kisah ini, agar semakin banyak yang peduli. Tuhan memberkati.